Hello everybody, a very good morning to all of you. This is Hrusikesh Sahu from Odisha Adarsha Vidyalay, Begana Korai Jajpur. I welcome you all to Standard 9 Civics class. So, what we will learn today? Today we will discuss about the two houses of parliament. So before start the new topic, just recall that what we had discussed in our previous class. In our previous class, we had discussed that why do we need parliament. So in this topic, we saw that parliament, which is also known as the legislature, the national assembly, which of the elected representative, that is known as parliament, and parliament is mostly necessary, or we need a parliament because parliament is the final authority for making laws in any country. Second, we saw that parliament exercises control over those who run the government. Third point, we had discussed that parliament controls all the money that governments have. And the last point, we had discussed that parliament is the highest forum of discussion and debate on public issues and national policy. So due to all these points, we saw that a parliament is most necessary for a democratic country, and these are the significance of a parliament in a democracy. So let's start the today's topic, two houses of parliament. So as we had discussed in our previous class, there are two houses of parliament. So mainly parliament are divided in two parts, that is called chambers or houses. In every country, not only in India but also in every country in all over the world, the parliament is divided into two parts, and that two parts is called as the chambers or houses. तो हर एक कंट्री में, सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि पूरे दुनिया में जितने भी कंट्री है, हर एक कंट्री की जो नेशनल असेंबली है जिसको पार्लियामेंट कहा जाता है, तो उनके पार्लियामेंट को दो हिस्सों से डिवाइड किया गया है, और जो दो पार्ट्स में उसको डिवाइड किया गया है उसको उसी दोनों हाउसेस, उसको दो हाउसेस या कहा जाता है या कहाँ पर दोनों चैम्बर भी कहा जाता है. So in India we have also two houses in our parliament. One is known as Lok Sabha and the another one is known as the Rajya Sabha. जैसे कि मैंने यहाँ पर तुम्हें ऑलरेडी दिखाया है, तुम्हें यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर लोकसभा जो कि पार्लियामेंट, इंडियन पार्लियामेंट का एक हाउस है और एक चैम्बर है, और दूसरा है राज्यसभा. तो तुम्हारे दिमाग में यहाँ पर ये सवाल आता होगा, इफ वी हैव टू हाउसेस इन आवर पार्लियामेंट, इंडियन पार्लियामेंट, देन व्हाई आई हैड मेंशन्ड अबाउट द प्रेसिडेंट. सो इसके बारे में मैं तुम्हें आगे बताऊंगा. सो लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट लोकसभा एंड राज्यसभा. लोकसभा, as you know that the Indian parliament is comprises of two houses, that is Lok Sabha, Rajya Sabha, and another one is the president. So Lok Sabha, it is also known as the house of people. लोक सभा जो है हमारा, लोकसभा को हाउस ऑफ पीपल भी कहा जाता है. The member of the Lok Sabha is directly elected by the people. So this house, that means Lok Sabha is directly elected by the people. तो क्या इसका मतलब लोकसभा जो है वो लोगों के द्वारा इलेक्टेड होता है? No, that means here the members of the Lok Sabha, the MPs of Lok Sabha, the Lok Sabha's MPs are directly elected by the people through the process of election. तो डायरेक्टली जो इंडिया के लोग होते हैं, हमारे भारत के जो सिटीजन्स होते हैं, तो सिटीजन के द्वारा ये लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो होते हैं, लोकसभा के एमपीज जो होते हैं लोकसभा के, वो लोगों के द्वारा डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं. As the members of the Lok Sabha are directly elected by the people, that's why Lok Sabha exercise the real powers on behalf of the people. As we saw that the members of the Lok Sabha are directly elected by the people, so that's why the Lok Sabha members exercise the real power on behalf of the people. तो जैसे कि वो लोगों के द्वारा इलेक्टेड होते हैं, तो उस वजह से वो लोगों का पावर को डायरेक्टली एक्सरसाइज करते हैं, और उस वजह से लोकसभा के हाथों में, और लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं उनके हाथों में सबसे ज्यादा पावर होता है. देन लेट्स टॉक अबाउट द राज्यसभा. राज्यसभा इज ऑल्सो नोन एज द काउंसिल ऑफ स्टेट्स. सो इसको काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी कहा जाता है. जैसे लोकसभा को द हाउस ऑफ पीपल कहा जाता है, सो इन द सेम वे राज्यसभा इज ऑल्सो कॉल्ड एज द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, बिकॉज as you know, I want to say one thing, that Lok Sabha mostly representing to the peoples of the nation.
ओके, सो हमारे जो कंट्री के पीपल्स है, लोकसभा लोगों को रिप्रेजेंट करता है, पीपल्स को रिप्रेजेंट करता है. एंड राज्यसभा मोस्टली रिप्रेजेंटिंग टू द डिफरेंट स्टेट्स. सो दैट्स व्हाई राज्यसभा इज आल्सो कॉल्ड एज द काउंसिल ऑफ स्टेट्स. राज्यसभा इज इनडायरेक्टली इलेक्टेड. That means here you can say that the members of the Rajya Sabha are indirectly elected. Then how they are indirectly elected? The members of the Rajya Sabha indirectly elected by the members of the Legislative Assembly. What we saw that the members of the Lok Sabha members are directly elected by the people. But in case of Rajya Sabha, the members are directly not elected by the people. They are indirectly elected by the people. How? Because the members of the Rajya Sabha elected by the members of the state legislative assembly. तो हमारा जो विधान सभा होता है, हर एक स्टेट्स में जो विधान सभा है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, तो उस स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स के द्वारा राज्यसभा के मेंबर्स को इलेक्टेड किया जाता है. थर्ड पॉइंट इज दैट Rajya Sabha performs special functions such as look after the interest of various states, regions or federal units. So as I told you that Rajya Sabha representing to the different states. So Rajya Sabha mostly for the functions of the Rajya Sabha mostly such as looks after the interest of the various state. तो ये स्टेट की जो हमारा डिफरेंट स्टेट है, जो राज्य है, तो राज्य की इंटरेस्ट के लिए ये काम करता है. कोई पर्टिकुलर रीजन की इंटरेस्ट के लिए काम करता है, या जो फेडरल यूनिट्स है हमारा, उस यूनिट्स के लिए ये राज्यसभा काम करता है. ये कोई लोगों के लिए पर्टिकुलरली लोगों को रिप्रेजेंट नहीं करता है या लोगों के लिए काम नहीं करता है. Then let's talk about president. As I told you, president is a part of the parliament, but she is not the part of any houses. So that means president of India is not a part of any houses. That means he or she is not the part of the Lok Sabha or not the member of the Rajya Sabha. तो वो लोक सभा के भी members नहीं होते हैं या राज्य सभा का भी members नहीं होते हैं. Then why president became a part of the parliament? Why president is considered as a part of the parliament? अगर वो दोनों houses के members नहीं हैं तो उनको क्यों parliament का एक part माना जाता है? As you know that president is the head of the executive head उनको माना जाता है. Her assent is also required in law making process. Just remember about the जो ऑफिशियल मेमोरेंडम की केस के बारे में रिकॉल करो. तो हमने क्या देखा था that the president addressed the parliament when government decided to implement the Mandal Commission's recommendation, and after that recommendation was passed in both houses of the parliament, that sent to the president office for his approval. So every bill which is passed by the parliament, every bill which is passed by the both houses of the parliament, after it passing by the both houses, it is sent to the president office, and when it gets the president's recommendation, president's approval, then it can become a law. तो उस ड्राफ्ट बिल को, उस जो भी लॉ पास किया जाता है, जब तक उसको प्रेसिडेंट की अप्रूवल नहीं मिलता है, क्योंकि वो प्रेसिडेंट जो होते हैं वो एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं, तो उनकी अप्रूवल के बिना, उनके एक्सेंट के बिना कोई भी जो कि लॉ इंप्लीमेंट नहीं हो सकता है. तो उस वजह से प्रेसिडेंट को भी जो कि पार्लियामेंट का एक पार्ट माना जाते हैं. ओके, प्रेसिडेंट. तो यहाँ पर तुम्हारे मन में ये सवाल आता होगा कि यहाँ पर सी क्यों लिखा गया है? Because here C is mentioned in your NCERT book, because it is said that both men and women can also become a president of India. तो यहाँ पर जो महिलाएं हैं, तो महिलाएं भी भारत के राष्ट्रपति जो प्रेसिडेंट बन सकते हैं. तो उस वजह से यहाँ पर C टर्म को यूज किया गया है. So there is a homework for you that you have to find out who is the first and last female president of India. Okay, so you have to find out the answer. Then just have a look upon the pictures. I have already given the pictures of both the Lok Sabha and Rajya Sabha. These are the two houses of the parliament. So ये जो green carpet वाला जो left side में तुम picture देख रहे हो, this is the picture of Lok Sabha. और जो right side में जो picture देख रहे हो red carpet में, this is the pictures of the Rajya Sabha. So देखो ये जो लोकसभा और राज्यसभा, ये दोनों का क्या डिफरेंसेस है. सो द टोटल नंबर की अगर बात करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स, सो देयर आर 545 मेंबर्स इन द लोकसभा. देन व्हाई आई हैड मेंशन्ड हियर दैट 543 plus 2, because among 545
543 members are directly elected from different states and union territories, and 2 members can be nominated by the president from Anglo-Indian community when president feels there is no such representation of the Anglo-Indian community in the Lok Sabha. तो जो हमारे भारत के राष्ट्रपति हैं तो वो क्या कर सकते हैं, जो कि लोकसभा को 2 मेंबर्स को नॉमिनेट कर सकते हैं. तो टोटल जो मेंबर है, अभी प्रेजेंट मेंबर है हमारे लोकसभा में 543 मेंबर्स हैं, 545 मेंबर्स, 545 से 543 मेंबर जो कि डायरेक्टली डिफरेंट स्टेट्स और यूनियन टेरिटोरीज से लोगों के द्वारा इलेक्टेड होते हैं, और 2 मेंबर अगर प्रेसिडेंट को ऐसे लगता है कि एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का कोई भी रिप्रेजेंटेशन लोकसभा में नहीं है, तो उस समय में प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के 2 मेंबर्स को लोकसभा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. देन इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा, द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द राज्यसभा इज 245 and among them 233 are indirectly elected by the members of the legislative assembly from different states, and 12 member can be nominated by the president from different backgrounds such as science, arts, culture, sports, technology. सो डिफरेंट बैकग्राउंड से वहां पर प्रेसिडेंट जैसे लोकसभा में दोनों मेंबर को इलेक्टेड नॉमिनेट करते हैं, तो उसी तरह राज्यसभा में भी जो कि प्रेसिडेंट 12 मेंबर को नॉमिनेट करते हैं. और राज्यसभा की जो टोटल स्ट्रेंथ है हमारा वो है 245 से में से मैंने जैसे बताया कि 233 डिफरेंट स्टेट से स्टेट के लेजिस्लेटिव मेंबर के द्वारा, असेंबली के मेंबर के द्वारा इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, और 12 मेंबर प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है या नॉमिनेट किया जाते हैं. Then who elect the members of the Lok Sabha and Rajya Sabha? So the members of the Lok Sabha, as we had already discussed earlier, they are directly elected by the people. So the members of the Lok Sabha are directly elected by the people, and the members of the Rajya Sabha are indirectly elected by the MLAs. We had already discussed about that this topic in earlier part. Then what is the length of term in years? So the length of the Lok Sabha is 5 years, and the length of the Rajya Sabha is 6 years. That means after election the Lok Sabha can work for 5 years, and Rajya Sabha, the members of the Rajya Sabha's term is for 6 years. तो लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं उनका टर्म 5 years के लिए होते हैं, और लोकसभा का जो राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं उनका टर्म जो होता है 6 year के लिए होता है. लोकसभा का मेंबर्स की टर्म 5 years के लिए होता है, राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं उनका टर्म जो कि हमारे लिए उनके लिए 6 year का होते हैं. 6 year के लिए वो वहां पर रिप्रेजेंटेटिव की तरह काम करते हैं लोकसभा राज्यसभा में. देन देखो द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट कैन द हाउस बी डिसॉल्व और इज इट परमानेंट? So the Lok Sabha can be dissolved after every 5 years. After election, the members of the Lok Sabha and the Lok Sabha can work for 5 years, and after every 5 years, the Lok Sabha can be dissolved. But the Rajya Sabha is a permanent house. Why it is called as permanent house? Because this house cannot be dissolved at any time. Then how can we say that the term of the members of the Rajya Sabha is 6 years? Because after every 2 years, 1/3 members of the Rajya Sabha is retired from their tenure. तो हर 2 साल में राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं, टोटल मेंबर का 1/3 मेंबर को क्या किया जाता है, रिटायर कर दिया जाता है, उनके पद से, पोस्ट से निकाल दिया जाता है. तो फ्रेश वहां पर फिर से नॉमिनेट होकर, जो कि डिफरेंट स्टेट से इनडायरेक्टली इलेक्टेड होकर या प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट होकर, फिर वहां पर 1/3 मेंबर को जो कि क्या किया जाता है, फ्रेश इलेक्टेड किया जाता है. तो उस वजह से राज्यसभा जो कि कभी भी ये डिसॉल्व नहीं होता है, तो उसी वजह से सिर्फ उसके मेंबर्स चेंजेस होते रहते हैं, और पूरे मेंबर्स एक साथ भी चेंजेस नहीं होते हैं. हर 2 साल में 1/3 मेंबर चेंजेस होते रहते हैं. तो उस वजह से राज्यसभा को जो कि एक परमानेंट हाउस कहा जाता है. The next topic is that which of the house, Lok Sabha or Rajya Sabha, is more powerful? We had saw that in India we have 2 houses in our parliament. We have 2 chambers in our parliament, that is Lok Sabha and Rajya Sabha. So the questions here arises, which of the houses is more powerful? Is Lok Sabha more powerful or Rajya Sabha is more powerful? So Rajya Sabha is called the upper chamber and Lok Sabha is called the lower chamber.
So here in India, the Rajya Sabha is called the upper chamber and the Lok Sabha is called the lower chamber or lower house. तो राज्य सभा को upper chamber और upper house कहा जाता है, तो लोक सभा को जो कि lower chamber और lower house कहा जाता है। तो राज्य सभा यहाँ पर जैसे कि बड़े भाई की तरह होता है, लोक सभा जो होता है वो छोटे भाई की तरह होता है। तो क्या हम यहाँ पर ये कह सकते हैं, does it mean that राज्य सभा is more powerful? No, this is just an old style of speaking. Because Rajya Sabha, as it is representing to the states, so that's why it is called as the upper house. And Lok Sabha as representing to the people, so that's why it is called as the लोअर हाउस। तो राज्यसभा सिर्फ स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, तो उस वजह से क्या कहा जाता है, राज्यसभा को अपर हाउस कहा जाता है। लेकिन राज्यसभा यहाँ पर या लोकसभा को हम पावरफुल नहीं कह सकते हैं। तो कौन सा हाउस पावरफुल है? आवर कॉन्स्टिट्यूशन डॉज गिव द राज्यसभा सम स्पेशल पावर्स ओवर द स्टेट, बट ऑन मोस्ट मैटर्स द लोकसभा एक्सरसाइजेस सुप्रीम पावर। तो देखो वो क्या कह रहा है, आवर कॉन्स्टिट्यूशन, दैट मीन्स द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिव द राज्यसभा सम स्पेशल पावर ओवर द स्टेट्स। आज आई हैड ऑलरेडी टोल्ड यू दैट राज्यसभा मोस्टली रिप्रेजेंटिंग टू द स्टेट्स और रीजन और द फेडरल यूनिट्स। तो ये स्टेट्स और रीजन को रिप्रेजेंट करता है। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन ने राज्यसभा को स्पेशल पावर दिया है ओवर द स्टेट की कोई रिनेमिंग करना है, कोई स्टेट की नया फॉर्मेशन करना है, कोई दोनों स्टेट को मिलाकर एक नए स्टेट का फॉर्मेशन करना है। तो इसी तरह का स्टेट की इश्यूज के ऊपर राज्यसभा को स्पेशल पावर कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा प्रोवाइड किया गया है। बट ऑन मोस्ट मैटर द लोकसभा एक्सरसाइजेस सुप्रीम पावर। लेकिन दूसरे केस में अगर देखेंगे, स्टेट के अलावा अगर और कोई भी दूसरा केस होता है, दूसरा इश्यूज आता है, सो एट दैट इश्यूज लोकसभा मोस्टली एक्सरसाइजेस द सुप्रीम पावर। हाउ? तो क्वेश्चन ये हमारे दिमाग में आता है, हाउ लोकसभा एक्सरसाइजेस सुप्रीम पावर? बिकॉज देखो, लोकसभा एक्सरसाइजेस मोर पावर देन राज्यसभा। ये तुम्हारा डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आ सकता है एग्जाम में, एनुअल एग्जाम में, दैट हाउ लोकसभा एक्सरसाइजेस मोर पावर देन राज्यसभा। सो देखो, बिकॉज ड्यू टू सेवरल रीजंस हियर वी कैन से दैट लोकसभा एक्सरसाइजेस मोर पावर देन राज्यसभा। Why? देखो, the first point is that during joint session the view of the Lok Sabha is likely to prevail. So that's why we can say that Lok Sabha is more powerful than Rajya Sabha. So what do you mean by that? During joint session, that means in case of any difference between two houses, that means if any disturbances or if any conflict arises between two houses regarding a bill, regarding a law, at that situation the president of India can call the joint session of the both houses. अगर दोनों हाउसेस के बीच में कोई भी बिल को लेकर, कोई भी लॉ को लेकर दोनों के बीच में कोई डिस्टर्बेंसेस होता है, कोई कंफ्लिक्ट अराइज करता है, सो उस टाइम पर हमारे भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं वो दोनों हाउसेस की एक जॉइंट सेशन, एक जॉइंट मीटिंग अरेंज करवाते हैं। And members of both houses in this joint session, members of the both houses sit together and mostly vote either in support or against of that bill. तो ये जो जॉइंट सेशन होता है, जॉइंट सेशन में क्या होता है, दोनों हाउसेस के मेंबर, तो यहाँ पर तो लोकसभा की अलग चैम्बर है, राज्यसभा के अलग चैम्बर है, वहां पर अलग अलग वोटिंग होता है, लेकिन जॉइंट सेशन में ये दोनों हाउसेस के जो मेंबर होते हैं वो एक साथ बैठते हैं और बैठकर वहां पर क्या करते हैं, उसी बिल के ऊपर डिस्कशन, डिबेट होता है। एंड द व्यू ऑफ लोकसभा इज लाइकली टू प्रिवेल ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ मेंबर्स। आज वी नो दैट द मेंबर ऑफ लोकसभा इज मोर देन द राज्यसभा। तो राज्यसभा के मेंबर से लोकसभा की जो मेंबर्स है वो ज्यादा है। राज्यसभा के 245 मेंबर है, whereas the members of लोकसभा इज, टोटल मेंबर ऑफ लोकसभा इज 545। सो अगर राज्यसभा के मेंबर उस बिल को सपोर्ट करे या ना करे, जहां की हमने देखा है कि लोकसभा का मेंबर सबसे ज्यादा है, तो ऑलवेज इन द जॉइंट सेशन द डिसीजन इज ऑलवेज गोइंग इन फेवर ऑफ द लोकसभा। सो दैट्स व्हाई here we can say Rajya Sabha is less powerful than Lok Sabha and Lok Sabha is more powerful than the Rajya Sabha. The second point is that Lok Sabha exercises more powers in money matter. So in budget or any money matter, money related laws passed by Lok Sabha can be rejected by Rajya Sabha. कैन नॉट बी रिजेक्टेड बाय राज्यसभा। तो वो कह रहा है, देखो, लोकसभा एक्सरसाइजेस मोर पावर इन मनी मैटर। फर्स्ट थिंग आई वांट टू टेल यू दैट ए मनी बिल कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड इन द राज्यसभा।
Okay, money or money related bill cannot be introduced in Rajya Sabha. ओके, इट कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा। तो मनी बिल को इंट्रोड्यूस करना या बजट को इंट्रोड्यूस करना लोकसभा के हाथों में नहीं है, या ये लोकसभा की पावर में नहीं है। मनी बिल कैन बी ओनली इंट्रोड्यूस्ड बाय द लोकसभा। सो दैट्स व्हाई हियर वी कैन से दैट लोकसभा एक्सरसाइजेस मोर power in money matter. Then second thing is that the budget or any money related laws passed by the Lok Sabha cannot be rejected by the Rajya Sabha. तो जैसे मैंने कहा कि पहले तो राज्यसभा कोई भी मनी बिल को इम्प्लीमेंट इंट्रोड्यूस्ड नहीं कर सकता है हाउस में, पार्लियामेंट में। सेकेंड थिंग, जो मनी बिल या बजट पार्लियामेंट में लोकसभा के द्वारा अप्रूव किया गया है या पास किया गया है, उस मनी बिल को राज्यसभा रिजेक्ट भी नहीं कर सकता है। देन राज्यसभा का क्या पावर है मनी बिल के ऊपर? इट कैन ओनली डिले इट बाय 14 days और सजेस्ट एनी चेंज। The Rajya Sabha can only delay the money bill which is passed by the Lok Sabha for 14 days और suggest any change। तो उस बिल को सिर्फ 14 दिन के लिए अपने पास डिले करके रख सकता है या लोकसभा को कुछ चेंजेस के लिए सजेशन दे सकता है। But as the Lok Sabha is more powerful than the Rajya Sabha, so Lok Sabha is not bound to follow the suggestion given by the Rajya Sabha। लोकसभा के ऊपर ये बाउंड नहीं है कि राज्यसभा जो सजेशन देगा वो उसको एक्सेप्ट करेगा। That suggestion can be accepted by the Lok Sabha or cannot be accepted by the Lok Sabha. So if Rajya Sabha failed to pass that money bill within 14 days, after that it will be automatically considered that that bill is passed by the Rajya Sabha, and then that money bill can be sent to the president office for the approval of the assent of the president. Okay, so that's why here it is mentioned that Lok Sabha exercises more power in money matter. तो यहाँ पर भी हमें पता चला कि मनी मैटर में सबसे ज्यादा पावर लोकसभा के हाथों में होता है। सो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि लोकसभा जो कि राज्यसभा से ज्यादा ताकतवर होता है, पावरफुल होता है। थर्ड पॉइंट इज दैट द लोकसभा कंट्रोल्स द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर। सो फिर हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है, हाउ, कैसे लोकसभा जो होता है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को, प्राइम मिनिस्टर को कैसे कंट्रोल करता है? बिकॉज ओनली द पर्सन हु एंजॉय द मेजोरिटी सपोर्ट इन लोकसभा कैन बी अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर। आफ्टर जनरल इलेक्शन, द पार्टी who own the majority number of seats in the general election, the leader of that party can be appointed as the prime minister. No one else can be appointed as the prime minister. So here you can say when only that person who enjoy the majority support in the Lok Sabha can be appointed as the prime minister. तो जब मेजोरिटी पार्टी के मेंबर उस व्यक्ति को सपोर्ट नहीं करेंगे, उनके मेंबर को या जो भी प्राइम मिनिस्टर है उनको सपोर्ट नहीं करेंगे, तब प्राइम मिनिस्टर हो या कोई भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, ये वहां पर नहीं रह सकते या प्राइम मिनिस्टर बन नहीं सकते। With no confidence motion, all ministers including prime minister can be forced to quit. Okay, so if any opposition party or any member mostly introduce the no confidence motion in the parliament. No confidence motion कब इंट्रोड्यूस किया जाता है? इस बिल को कब इंट्रोड्यूस किया जाता है? अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि सरकार के ऊपर तुम्हें भरोसा नहीं है, सरकार लोगों के लिए कोई काम नहीं कर रहा है, सरकार जो भी कंट्री की सिचुएशन है उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, एट दैट सिचुएशन उस टाइम पर तुम क्या कर सकते हो, जो कि नो कॉन्फिडेंस मोशन पार्लियामेंट के हाउस में, कोई भी हाउसेस में इंट्रोड्यूस कर सकते हो। एंड इफ दैट नो कॉन्फिडेंस मोशन इज पास्ड इन द पार्लियामेंट, देन ऑल मिनिस्टर इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर कैन बी फोर्स्ड टू क्विट। तो उनको अपना पोस्ट, अपना कुर्सी छोड़ने के लिए मजबूर किया जाता है, वो उनको अपनी पोस्ट से, उनको अपनी पद से निकाल दिया जाता है। Then the next topic that is the distinguish between Lok Sabha and Rajya Sabha. तो as I told you, तो तुम्हें ये भी questions आ सकता है, differentiate between Lok Sabha and Rajya Sabha. So we had already discussed about these points. So देखो, the members of the Lok Sabha are directly elected by the eligible voters. तो हमने देखा कि पहला जो difference है ये क्या है, that the members of the Lok Sabha are directly elected by the voters, eligible voters are directly elected by the people. Second thing is that the period of Lok Sabha is 5 years. Whereas the members of Rajya Sabha are indirectly elected by the members of the state legislative assembly, and the Rajya Sabha is a permanent body and 1/3 member of its members retire in every 2 years. Permanent Rajya Sabha जो है हमारा permanent body है and it cannot be dissolved at any time. Only 1/3 of its member can be retire after every
2 years. The maximum strength of Lok Sabha is 552, and presently there are 545 members. Among them, 543 members are elected and 2 members are nominated from Anglo-Indian community. And the total strength and the maximum strength of Rajya Sabha is 250 members. Money bill can only be introduced in the Lok Sabha. It grants the money for running the administration of the country. So जैसे कि हम लोगों ने मैंने ये भी तुम्हें कहा है कि मनी बिल जो होता है वो सिर्फ लोक सभा में इंट्रोड्यूस्ड होता है, एंड राज्यसभा डज नॉट एक्सरसाइज मच पावर ओवर द मनी बिल, एंड राज्यसभा कैन नॉट इंट्रोड्यूस ए मनी बिल इन द हाउसेस. Then Rajya Sabha is less powerful and Lok Sabha is more powerful. So these are the basic difference between the two houses of the parliament. So let's recall what we had discussed in our today's class. In today's class we had discussed about the two houses of parliament, and we saw that the Indian parliament comprises of two houses of the parliament, that is Lok Sabha, Rajya Sabha, and president. President is not a part of any houses, but her assent is required to make a law in the country. So that's why president is considered as a part of the parliament. Thereafter we had discussed about the difference between the parliament, जो लोक सभा और राज्य सभा के डिफरेंस, उनके बीच में क्या क्या डिफरेंस है उसके बारे में हमने डिस्कस किया. देन हमने डिस्कस किया why लोक सभा is more powerful. That we saw that Lok Sabha is more powerful because during joint session the view of the Lok Sabha is likely to be frivolous. Second thing we discussed that Lok Sabha exercises more power in money matters. Third point we had discussed that Lok Sabha controls the Council of Ministers and Prime Minister. So that's why we saw that Lok Sabha is more powerful than the Rajya Sabha. And at last we had discussed and about the distinguish between लोक सभा एंड राज्य सभा, जो भी दोनों के बीच में डिफरेंसेस था उसके बारे में भी हमने डिस्कस किया. Okay, so that's all for today. At last I want to ask you some questions. So my questions is that, first questions is that what are the two houses of parliament? As we had discussed that discussed earlier, two houses of the parliament, that is Lok Sabha and Rajya Sabha. Second question is that which house of the parliament is more powerful? We had also discussed here that Lok Sabha is more powerful than Rajya Sabha in different matters. तो अलग अलग matters के लिए हमने वहाँ पर एग्जाम्पल में देखा कि लोक सभा जो कि सबसे ज़्यादा पावरफुल है राज्य सभा से. थर्ड पॉइंट इज दैट वाई लोक सभा इज मोर पावरफुल देन राज्य सभा. So हमने देखा why Lok Sabha is more powerful, that because during the joint session the view of Lok Sabha is likely to be frivolous. Lok Sabha exercises more powers in money matters. Lok Sabha controls the Council of Minister and Prime Minister. So that's why as Lok Sabha enjoy more power than Rajya Sabha, so that's why we can say that Lok Sabha is more powerful than Rajya Sabha. Then at last questions, my last questions is that distinguish between Lok Sabha and Rajya Sabha. As we had discussed that Lok Sabha is the members of the Lok Sabha are directly elected by the voters, by the members, by the people, and the members of the Rajya Sabha are indirectly elected by the members of the state legislative assembly. The period of Lok Sabha is 5 years, but the period of Rajya Sabha is not there, because Rajya Sabha is a permanent body, and the term of every member is 6 years, and in every 2 years 1/3 of its total member is retired from Rajya Sabha. Then third point is that the maximum strength of the Lok Sabha is 552, and the maximum strength of Rajya Sabha is 250. The present strength of Lok Sabha is 545, and the present strength of the Rajya Sabha is 245. Then the fifth point is that money bills can only be introduced in the Lok Sabha, and it grants the money for running the administration of the country, and the Rajya Sabha does not exercise much power over the money bill. And at last we saw that Lok Sabha is more powerful than the Rajya Sabha, and the Rajya Sabha is less powerful than the Lok Sabha. That's all for today. Thank you very much.